अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी गोना डिस्कस अनदर लिटरेरी पीरियड दैट इज़ द जॉर्जियन पीरियड. It started in 1910 or 1911 and ended in 1936. Georgian era. The Georgian period usually refers to the reign of George V from 1910 to 1936, but sometimes also includes the reigns of four successive Georges from 1714 to 1830. जॉर्जियन इरा उस इरा को कहा जाता है जब जॉर्ज फाइव का रूल था और काफ़ी जगहों पर उनके फोर सक्सेसर्स को भी उनके टाइम पीरियड को भी इंक्लूड किया जाता है जॉर्जियन इरा में. Now let's discuss for what reasons Georgian era is known for. The Georgian period saw British establish itself as an international power at the center of an expanding empire. The accelerating change from the 1770s onwards made it the world's first industrialized nation. जॉर्जियन एरा को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ब्रिटेन जो है वो इंटरनेशनल पावर बन चुका था. 1770s के बाद जितने भी चेंजेस आए उसके बाद ब्रिटेन जो है वो दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन चुका था. रेवोल्यूशन. द जॉर्जियन डिड नॉट only give us great literature, they also gave us industrial revolution and an agricultural revolution. जॉर्जियन एरा में ना सिर्फ लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था बल्कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी आया. Before the Industrial Revolution, British industry was normally small scale and relatively unsophisticated. Production was usually on small scale. Meanwhile, the agricultural revolution changed the way that the farming world worked. पहले क्या होता था ब्रिटेन में जितना भी इंडस्ट्रियल वर्क हुआ करता था या फिर एग्रीकल्चर वर्क था वो बहुत ज़्यादा स्लो था. स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हुआ करती थी. लेकिन जॉर्जियन पीरियड में जस्ट ही रेवोल्यूशन आया तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होने लग गई और प्रोडक्शन का स्केल भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था. A change in the way Georgians used tools during the Industrial Revolution also saw a change in people's living patterns and lifestyles. People began to live longer and move to the cities. इस रेवोल्यूशन के दौरान जो जॉर्जियंस हैं उन्होंने डिफरेंट टूल्स यूज़ करना इस्तेमाल कर लिए थे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करना इस्तेमाल कर ली थी. इसकी वजह से जो लिविंग स्टाइल्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था. लोगों के लाइफ स्टाइल्स काफ़ी चेंज हो चुके थे. लोग जो है वहाँ पे लंबी ज़िंदगियाँ गुजारने लग गए और वो मूव हो गए थे सिटीज़ की तरफ. Now let's discuss the class structure of the Georgian period. The Georgians shaped the nature of the social class system and this remains in modern Britain. Number 1 upper class, number 2 middle class, number 3 working class. जॉर्जियन पीरियड पे जो ब्रिटेन का क्लास स्ट्रक्चर था वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था. एक तरफ अपर क्लास, दूसरी तरफ मिडिल क्लास और तीसरी तरफ हमारे पास थी वर्किंग क्लास. Now let's discuss them one by one. The upper class. The upper class was a small segment of society and included the wealthiest. It was an elite aristocracy that was closed off to all others. The upper class was not infrequently subject to criminal acts in Georgian England, though as there was not a police force in the modern forms. अपर क्लास सोसाइटी का वो हिस्सा है जिसमें एरिस्टोक्रेटिक क्लास रहा करती थी जो सबसे ज़्यादा वेल्थिएस्ट क्लास थी. Then we have middle class. The middle class was a little broader than the upper class, but it still retained a smaller percentage of society. It was made up of various businessmen and professionals. मिडिल क्लास इस सोसाइटी का वो हिस्सा थी जिसमें जो कि अपर क्लास से थोड़ी ब्रॉडर थी. इसमें वो लोग रहा करते थे जो कि बिजनेसमैन थे या वो किसी न किसी प्रोफेशन के साथ थे. At the last, we have working class. The working class made up the majority of the Georgian era's population. It was a class that was exploited by the rich and it was often forced to work in the newly formed factories. Children from as young as 5 were even made to work. वर्किंग क्लास सोसाइटी का वो हिस्सा है जो कि जॉर्जियन एरा का सबसे बड़ा हिस्सा वो कवर करती थी. ये वो हिस्सा था जिसमें रिच जो है उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे, उनसे काम करवाया करते थे. इवन जो चिल्ड्रन थे जो कि 5 साल के बच्चे थे उनको भी काम पे लगाया जाता था. Now let's talk about Georgian literature. Georgian literature is also known as Augustan literature. Fiction became very popular and along with this historical fiction also garnered the attention of the readers.
जॉर्जियन लिटरेचर को ऑगस्टन लिटरेचर भी कहा जाता है। इस दौरान फ़िक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और इसके अलावा हिस्टोरिकल फ़िक्शंस भी लिखी जाती थीं। Gulliver's Travels by Jonathan Swift and Don Quixote made a landmark during the time due to it going away from the traditional form of literature. They were long prose and they were also satirical in nature. कुछ इस तरह के काम लिखे गए थे जो कि लॉन्ग प्रोज थे और उसमें सटायर की टेक्निक यूज़ की गई थी और सारी वो टेक्निक्स यूज़ की जाती थी जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स से बहुत डिफरेंट थी. Authors during the Georgian era. The Georgian era came out with multiple kinds of literature which created a great impact on society, then and still continues to do so in 21st century. जॉर्जियन एरा में बहुत ही अच्छे ऑथर्स आए थे जिन्होंने डिफरेंट काइंड का लिटरेचर प्रोड्यूस किया था. वो वर्क्स ना सिर्फ जॉर्जियन एरा में मशहूर थे बल्कि स्टिल 21st सेंचुरी तक उनको पढ़ा जाता है और लोग उसी तरह से इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं. Here we have some literary figures. Jane Austen, Jonathan Swift, Daniel Defoe, Thomas Peacock, Leigh Hunt, Thomas de Quincey, Percy B. Shelley, Mary Shelley, Charles Lamb, John Keats, Lord Byron, William Hazlitt, Lawrence Stern, Samuel Richardson Maria, Edgeworth. Now let's look upon some literary works. Pride and Prejudice by Jane Austen, Mansfield Park by Jane Austen, Sense and Sensibility by Jane Austen, Emma by Jane Austen, Gulliver's Travels by Jonathan Swift, Robinson Crusoe by Daniel Defoe, Nightmare Abbey by Thomas Peacock, Headlong Hall by Thomas Peacock, Crouched Castle by Thomas Peacock, Clarissa by Samuel Richardson. So this is all about the Georgian period in which we discuss some of the events, some literary figures and works. Hope you enjoyed this lesson. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.